Assalamu alaikum. This is our paper 2 class for work, energy and power. And last time we were doing some newer questions, and this is a bit older one. This is June 2012. This is June 2012, paper 2 question number 2. A ball is thrown vertically down towards a ball is thrown vertically down towards the ground and rebounds as illustrated in the question in the diagram. ये question देखो. A ball is thrown vertically down towards the ground and rebounds as illustrated in the figure. Ball passing point A. ये इसकी velocity आ रही है 8.4. Ball at maximum height after rebound. As the ball passes A, it has a speed of 8.4. As the ball passes A, it has a speed of 8.4. The height of A is 5 meters above the ground. The ball hits the ground and rebounds to B. Assume that air resistance is negligible. ये वो point होता है जो आप check कर लो शुरू से. It means acceleration is equal to G. Calculate the speed of the ball as it hits the ground. तो इसको हम डेटा बना लेते हैं बिकॉज इसको हमें बताना है कि किस स्पीड से. तो u हम रख लेते हैं. We can put the value of u as 8.4 and air resistance is not considered. So a is equal to plus g. Height is 5 meter and we need to find velocity. The formula is there, 2as is equal to v square minus u square. You have to put in all the values and you have to get the answer. I'm making v the subject of this formula. Now this is a working. Complete this working, please, or whatever answer you get, let me know on the chat. This is June 2012, paper 22, question number 2.
Answer is 12.96. Good. And if you're getting 12.96, आप इसको, you have to round 12.96. The answer is coming. So you can keep it 12.96. Show that the time taken for the ball to reach the ground is 0.47. So this will be our formula. V is equal to U plus AT, and T will be equal to V minus U upon A. We have all the values in hand. We have U is equal to 8.4. V is equal to 12.99. A is equal to plus G, which is 9.8. And we need to find time. So we are doing June 2012, paper 22, question number 2. And you have to see this working. And we are on the second part of this question. No, it's work energy power. लेकिन आजकल वो सवाल तो मिक्स हो जाते हैं ना, है तो वर्क पावर एनर्जी का, लेकिन वर्क पावर एनर्जी में ये जो काइनेमेटिक्स तो अक्सर इन्वॉल्व होता है. सो ये कैलकुलेशन करो, और ये वाली डायग्राम है which we are following. This is a ball which is rebounding from the ground. The ball is hitting the ground and rebounding. We have done the first part, calculate the speed of the ball as it hits the ground, and we are presently doing part number 2. I have made the data. तो इसकी वर्किंग मुझे करके, और ही सिंह आंसर आना चाहिए 0.47. सही. So the time is coming to be 0.47 second. If you move forward, the ball rebounds vertically with a speed of 4.2. As it leaves the ground, the time the ball is in contact with the ground is 20 milliseconds. The ball rebounds to a maximum height h. The ball passes A at time t is equal to 0 on figure 2.2. 2.2, plot a graph to show the variation with time of the velocity of the ball. Continue the graph until the ball has rebounded from the ground and reaches B. Now he has given us the idea कि देखो जो initial height है वो 5 है, जहां से बॉल 8.4 पर गई थी ना. तो अब 8.4 है, तो मैं ऐसा करता हूं कि I put here 5 and I put here 10. I put -5, -10. The time the ball took reach the ground is 0.47.
So I can see I have a time span of 0.47 for the ball to come down. So मैं यहाँ पर 0.2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 0.4 ले लेता हूँ, यहाँ पर 0.6 आ जाएगा, and then I have 0.8. Scale can be made on your own. Now he says the ball speed is 8.4. 8.4 की speed से ball is coming down and it reaches 0.47. तो air resistance is negligible. Observe this point कि देखो air resistance नहीं है. जब भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होती है तो ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन लेता है, क्योंकि फिर कर्व नहीं बनता है ना. और 0.47 आप ऐसे अंदाजे, मतलब बहुत एक्यूरेट प्लॉटिंग नहीं है, बट इट इज एन अप्रोक्सीमेट प्लॉटिंग. लाइक दिस. The speed of the ball which I have to touch is 8.4. So अब मुझे 8.4 तक जाना है and 0.5 के ऊपर. So I start from here. I have to reach 8.4. So this is 7.5. This is this will be, if I take it 6 like this, 6, 7 and 8. So it will be coming here approximately. I'm taking 0.4 और 0.6 के बीच का नंबर ले रहा हूं मैं, तो ये तकरीबन यहां आ जाएगा. I'm taking 8.4. देखो यहां पर I'm taking 8.4 और यहां पर in between 0.47. So this is 0.47. I have drawn it this way. Now he says in the question आप पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में कहता है कि the ball is in contact. देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला पॉइंट. The ball is in contact. The ball is in contact with the ground is 20 millisecond. और उसके ball rebounds to a maximum height h. हमें rebound की velocity तो नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि बॉल हिट्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 12.96. दिस इज द वेलोसिटी. We need to make a correction, I think, because the ball passes A at t is equal to 0. I think we have to make a correction because the other number 12.96, this number is not coming in my way ना. देखो जो स्केल मैंने बनाया है उसमें 12.96 का मसला आ जाएगा. I have to change the scale because 12.96 will be a problem. So I'm changing the scale. I'm putting here 10 and I'm putting here 20, minus 10 and minus 20. So I can plot here, and he's saying the first point is 8.4. So 8.4. I'm putting here. अच्छा, बाद में हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी वो थी 12.96.
12.96 कहाँ आएगा? तकरीबन यहाँ पर 12.96 यहाँ पर. So I'm changing this position from here. Let me start the app again. Now the ball has started its motion from this point, and I have moved it till here. From this, there is a delay of 20 milliseconds, and the ball rebounds to height h. He has not given us the height h, so हम इसको randomly किसी भी position पे बना सकते हैं. Twenty millisecond is a very small number. 20 upon 1000, if you do, you will get a very small number. So आप इसको बहुत थोड़ा सा करके यहाँ तक ले आओ. हमें नहीं पता कि इसका rebound कहाँ तक हुआ, क्योंकि उसने उसकी height दी हुई है. He has given us a rebound height h. तो लग तो रहा है कि ज्यादा ऊपर तक नहीं गया, तो इसलिए हमने उसको वापसी पे डिस्टेंस कम कर दी है. Now we move forward. आगे पढ़े. The ball has a mass of 0.050 kg. It moves from A and reaches B after rebounding. For this motion, calculate the change in kinetic energy. अब हमें ये दो पार्ट करने. Everyone should read the question with me, and this is the situation. Ball was falling from 8.4 and ball at maximum height. अब जब देखो लिखा होता है ना maximum height, तो maximum height पे velocity 0 हो जाती है. ये मेरे पास u है. मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर आप लोग मुझे कैलकुलेशन में हेल्प करना. डेल्टा ई के इज इक्वल टू हाफ m v square minus u square. I have all the values. मेरे पास ये वैल्यू देखो मास की दी हुई है, और इनिशियल वैल्यू दी हुई है 8.4, फाइनल 0 है. फाइनल 0 है, मास गिवन है. I need to find change in kinetic energy. So I have made the data. आप मुझे इसकी कैलकुलेशन करके दो.
ये डेटा पुट करो और सॉल्व करके दें इफ यू गेट द आंसर. बहुत सिंपल है. देखो सिंपल डेटा है आपके पास. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी and you need to find change in kinetic energy. So it's only a formula working. रिबाउंड वेलोसिटी डबल चेक कर लेते हैं. एक सेकंड. रिबाउंड वेलोसिटी कहाँ दी हुई? अच्छा हाँ ठीक है. इसने एक रिबाउंड वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 4.2. हाँ ये भी दिया हुआ. सही है. डबल चेक कर लेते हैं. It moves from A and reaches B after rebounding. नहीं वो सवाल में उसने 4.2 को नहीं यूज किया. He has not used it. Even though it's given here, the ball is in contact with the ground in for 20 millisecond. But he says that देखो इसने positions का नाम दिया है ना, A and then B. So A पर velocity 8.4 है और B पे 0 है. So use this calculation please and solve the formula. If you get the answer, please let me know. You need to find kinetic energy change. It's given 0. This is the working. आंसर आए तो बताओ. Anyone please share the answer if you can get. $1.76. Double check कर लो. 0.05. There's a half with it also. I think I forgot to write half here.
check this calculation. There is a half before. There is a half before 0.05. अच्छा, okay. Then you are getting 1.76. Okay. सही है, perfect. 1.76 joule. Gravitational potential energy. This is the next question. He's asking for the change in gravitational potential energy. Gravitational potential energy is mgh, and it requires the idea of difference in height. Look, this is the difference in height, and I need this difference. This is the delta H. Whenever you need to find the change in gravitational potential energy, you have to look for the change in height. This is the formula. Now, अब ये जो हाइट है, जो ऐसा करते हैं कि ये वाली हाइट निकालते हैं, और ये हाइट अगर निकल जाए ना, तो फिर उसको 5 में से माइनस कर देंगे तो डेल्टा एच आ जाएगा. अब ये हाइट कैसे निकलेगी? हमारे पास डेटा जो है वो यहां से बना लेते हैं कि ये बॉल यहां से रिबाउंड कर रही है, एंड आफ्टर रिबाउंड इट गोज अप टू द हाइट एच. He has given us the idea. The rebound velocity is 4.2. Rebound पे velocity है 4.2. हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी हो जाती है 0. एक्सेलरेशन में लूंगा -g. आप लोग मुझे हाइट कैलकुलेट करके दे दो. टू AS is equal to V square minus U square. So सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दो और मुझे हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर दो. इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा. हाँ, लेकिन आप पहले हाइट निकालोगे ना, पहले हाइट निकलेगी तो फॉर्मूला लगेगा ना. एज आई मेंशन हियर, मैंने आपको यहाँ समझाया ना. देखो, ये मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा. आई नीड टू फाइंड द चेंज इन हाइट 0.9. सो अभी मैंने निकाली है हाइट. इसके बाद हम करेंगे 0.9 हाइट का आ गया. अब जो चेंज इन हाइट है, जो डिफरेंस है ना, वो 5 से माइनस कर लेते हैं. 5 माइनस 0.9, क्योंकि देखो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि बॉल जब गिरी है तो वो 5 है. ये वाली आपने अभी निकाली 0.9 है. मुझे निकालना ये वाली हाइट है. ए टू एस में एस इज द हाइट. 2as का जो फॉर्मूला होता है उसमें s का मतलब होता है s इज द हाइट, s इज द डिस्टेंस. 5 माइनस 0.9 कर दो तो हाइट आ जाएगी 4.9. फिर पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो निकालो.
This is the formula. Now I have the value for mass, I have the value for G. अब इसमें सारी वैल्यूज प्लग इन करो तो इट कम्स टू बी 0.441 जूल. दोबारा चेक कर लें. mg डेल्टा mass is given to be 0.05. बहुत छोटा नंबर आ रहा है. एनीवेज इसको चेक कर लीजिएगा जरूर. State and explain the total change in energy of the ball for this motion. अब एनर्जी गई कहां? गिरते वक्त रिबाउंड होने के बाद. why the ball didn't rebound the full? बॉल पूरा वापस क्यों नहीं आई? जो बॉल है वो फुल रिबाउंड क्यों नहीं हुई? बिकॉज जब बॉल ने आकर फ्लोर को हिट किया, देखो बॉल ने आके फ्लोर को हिट किया तो बॉल बहुत थोड़ा सा रिबाउंड हुई. He is asking what happened to the energy of the ball. The ball, when the ball strikes the ground, some of the energy converts into heat, some of the energy converts into sound, and some of the energy converts into the deformation of the ball. So some of the energy has converted into heat, some of the energy has converted into sound, and some of the energy has converted into deformation. So these are the energy changes involved. That is why the ball couldn't rebound to the same height. Now I'm starting question number 2. This is June 2013. Paper is 21 and question number 3. An object falls vertically from rest through air. अब की बार वो air को consider कर रहा है. State and explain the energy conversion that occur as the object fall. देखो जब कोई चीज गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. गिरने पर फॉल वर्टिकली में उसकी पोटेंशियल कम हो जाएगी. एंड यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी आल्सो. सॉरी, यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. तो आप एग्जामिनर को क्या बताओगे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, gravitational potential energy decreases, and there is some work needed to overcome air resistance. You need to do some work against air resistance. Acha, a ball of mass 150 gram is thrown vertically upward with an initial speed of 25 meter per second. To calculate the initial kinetic energy, the formula says EK is equal to half m v square. Half mass is 150 gram. So I will use 150 upon 1000 into 25 square. So please help and solve this simple calculation कर दो. $46.875. Answer is 46.875. So just round it for 47. I'm rounding it for 2 sig fig. The question also gives me 150 gram, which is 2 sig fig. The data in the question is apparently coming in 2 sig fig.
The ball reaches a height of 21 meter above the point of release. For the ball rising to this height, calculate the loss of energy to air resistance. He's giving 3 marks to me for that. So ball is thrown vertically upward with an initial speed of 25. The ball reaches a height of 21 meter above the point of release. So I have the distance. The ball rising to this height, calculate the loss of energy. अब मैं ये करता हूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी तो पता है, मैं ऐसा करता हूं पोटेंशियल निकाल लेता हूं. पोटेंशियल is equal to mgh. Mass is 150 upon 1000 into 9.8 into 21. I'm finding potential energy so that I can come to know how much energy is translated into potential. Remaining would be air resistance, energy loss. So potential energy calculate करके दे दो. 30.9. Very good. 30.9. Thank you. Now the concept comes, you have thrown a ball upward. The ball is going upward. When the ball is going upward, there is a loss in kinetic and gain in potential plus work done against resistance. देखो 47 जूल जो है वो काइनेटिक है, उसमें से ये तो बन गई पोटेंशियल. सो जो रिमेनिंग बचेगी वो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा. सो 47 minus 30.9. This is the remaining energy which will convert into work done against resistance. ये कैलकुलेशन कर लो. It's 16.1. So I will again round it force due to the sorry, I lost the connection for a short point. फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू वर्क अपॉन डिस्टेंस और ये मैंने लगाया. अब जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 21 मीटर. सो आई विल पुट 21 हियर टू गेट द फोर्स. छोटी सी कैलकुलेशन ये कर दे.
0.76 Newton. Thank you, Ali. 0.76 Newton. This is the answer. So we have solved these two questions. As mentioned, हम इन questions को आराम से करते हैं, पूरा discuss करके, build the idea. Paper 2 का pattern ये है कि all parts are mutually connected. For doing paper 2 question, you have to keep on looking the first part, the title of the question. This is the way to handle these. You have to cover the significant figures, you have to convert, you have to cover unit conversion. So these are the 2-3 points always you have to remember when you are solving a paper 2 question. It's over for today, and inshallah we will do it in our next class. Allah Hafiz.